perception part, right? One second, let me share the screen now. Can you all see my screen, please? Yes, sir. Okay, okay, thank you. Okay, this was a slide that we didn't go through much. So communication skills are needed to inform, to influence people. Now, we gave an example of a teacher and a doctor wherein they inform people about what they are supposed to be doing. Then they learn and they revert to their teacher or a doctor as to they agree to it, they did not agree to it, they are going to be doing it or they will not be doing it. Second example is to influence. This is at a higher level. एक अगली सीढ़ी है जिसे हम कह सकते हैं. सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन सही प्रोवाइड करना सीखना पड़ेगा. अगर हमें आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसमें से हम काफी टिप्स ले सकते हैं. Once we are sure of what we are informing to others, then we can learn to influence people. When we influence people, it's very important for us to be able to negotiate our terms with them. जैसे कि अगर आप किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, हम आगे इस कोर्स में आगे रेज्यूम राइटिंग स्किल्स और जॉब में कैसे आप इंटरव्यू में परफॉर्म करें इसके बारे में भी सीखेंगे. तो इन्फ्लुएंसिंग इज अ पार्ट टू इट. सो वंस यू आर ओके विद द फैक्ट दैट you are able to inform people about the needs or the questions that they have, influencing salary के लिए negotiate करना आएगा. I'll not be helping you negotiation on salary, but I'll be helping you learn the negotiation part. ठीक है. शॉपकीपर का एग्जांपल हमने कल पढ़ा ही था. It was a very direct example that I want this product at this much price, and that's a clear communication. 100 रुपए की चीज है, मुझे 50 में दो. शॉपकीपर will say नहीं यार मैं 75 में दे सकता हूँ. That's it. If you beat around the bush, अगर हम आसपास की बात करते रहें तो उसका कोई solution हमें मिलेगा नहीं. Right? Express feelings is the third level. Okay, now when we are very excited, it actually changes the tone and it actually changes the level that we communicate at. Exam में pass हो गए, I am talking to my parents at a different level. उसके बाद भी घर में काफी सारे challenges है. I'll not be depressed about it because I'm happy for the fact that I have cleared the exam. So that message that I'm going to send to my parents or to my friends is going to be totally different. Vis-a-vis, if I'm not happy with something, it'll definitely impact my tone. And when the tone and the level of pitch that you have, जो आपकी आवाज जितनी ऊंची जाती है, जितनी नीचे जाती है, उससे भी सामने वाले को जो मैसेज मिल रहा है उस पर काफी इफेक्ट पड़ता है. Right? That's where the verbal and written communication are different to each other. Very simple thing. First, नीचे जो diagram दिख रहा है हमें, communication, we start with the sender. वो एक कोडिंग करता है, एक मैसेज अपने दिमाग में सोचता है, एंड एक चैनल है जिसके थ्रू वो सेंडर को भेजता है. जैसे कि आपने मैसेज क्लियरली सोचा दैट व्हाट इज योर नेम, यू आर वेरी क्लियर अबाउट द फैक्ट दैट यू ओनली वांट टू आस्क द नेम ऑफ द पर्सन. ठीक है, अभी सिर्फ कम्युनिकेशन शुरू ही हुआ है. आप पहले मैसेज में जाहिर सी बात है आप ज्यादा डिटेल्स नहीं पूछेंगे. सो यू आर श्योर कि आप सिर्फ नाम तक ही सीमित रखना चाहते हैं अपनी कन्वर्सेशन को. सो यू विल से व्हाट इज योर नेम and you might be writing that message. अगर आप लिख रहे हैं तो it's very important that you need to end the sentence with a question mark. That's a punctuation sign. But when you speak, you would say, what is your name? So name in the sense जैसे आपका end में tone ऊपर गया, the moment your tone goes up, it means that there is a question mark at the end. This is how we speak. This is how we speak in almost all the languages. So this is the behavioral change that you will see while doing a verbal or a written communication. According to the message that the receiver has received from you, he or she will provide the answer in written or in verbal sense. हो सकता है कि that person is sitting close to you
and he would look at the message, come back to you and answer in person, through a message कि मेरा नाम ये है या जो भी XYZ, ठीक है? And this is how the channel closes. The main thing is here, what are the situations that we can find ourselves into while closing the loop of this communication. There's a very simple loop of communication, ठीक है? ये हमने हर जगह देखा होगा, सुना होगा, इसमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है हमारे लिए, लेकिन फिर भी हम लोग कई जगह कम्युनिकेशन में चैलेंजेस फेस करते हैं. तो इन 4 स्टेप्स में, wherein the message is being written, is being sent, received and replied, इन 4 चैनल्स, इस चैनल के 4 स्टेप में कहाँ क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? कैन समबडी टेल मी अबाउट इट? बहुत छोटा सा लूप है, लेकिन फिर भी हमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, ऑफिसेज में, बिजनेसेस में. What can be the challenges? You don't have to look at the slides. You just have to think about, what can be the situation that is there. अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो आप अपने आप को म्यूट करना चाहेंगे प्लीज. Okay. Okay, we need to participate. I see various names on my screen. I would want to go to individuals and ask what could be the challenge that they think, could disturb their communication. The first name that I happen to see is Fayaz. Fayaz, इन 4 स्टेप्स के चैनल में आपको क्या लगता है कहाँ पे सबसे ज्यादा चैलेंजेस आते हैं? अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूँ तो. Sir, I don't know. सॉरी Sir, I don't know. आपकी आवाज नहीं आ रही सर. हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ क्लियर आ रही है, बताइए. सर मुझे पता नहीं सर. अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि थैंक यू फॉर ऑनेस्टली रिप्लाइंग ऑन इट फयाज. दिस इज द काइंड ऑफ आंसर दैट आई एम एक्सपेक्टिंग. अगर नहीं आता तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उसको और एक्सप्लेन करूंगा. एनीबॉडी एल्स? निसार, यू वांट टू टेक अ शॉट? ये सब हमने कल ही किया हुआ था. क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? सोहेल? मेहंदी? ओके, आई टेक इट ऑन मी देन. देखिए, इन 4 स्टेप्स के कम्युनिकेशन साइकिल में सबसे पहले जो चैलेंज आता है वो ये है कि हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस सही तरीके से स्टार्ट किया या नहीं. If I have a question for the person that I want to communicate with, I need to make sure that I frame my sentence, frame my question, or frame the message that I need to send to the person correctly. ठीक है? अगर हम सेंटेंस काफी जिब्रिश तरीके से पूछेंगे या बहुत क्लियर नहीं होगा, मेरे कहने का मतलब यहाँ पे, तो it's not going to be understood by the person clearly and we will not get the desired answer. ठीक है ना? Second is the channel that you're using. अगर आप WhatsApp पे मैसेज भेज रहे हैं किसी को, तो आपको इस बात को मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपका ऑटो करेक्ट ठीक है, नहीं तो एक की जगह कुछ और मैसेज टाइप हो जाएगा. अगर आप पर्सनली किसी और से बात कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा that your voice and your language clarity is such that the person who you think or you perceive has a certain background is able to understand. ठीक है? अगर आप उससे उस लैंग्वेज में बात नहीं कर पा रहे हैं जो वो समझता है या समझती है, हो सकता है आपको डिजायर्ड आंसर ना मिले. सो दैट्स द सेकंड स्टेज ऑफ प्रॉब्लम दैट यू माइट फेस. ठीक है? जस्ट गिव मी 1 सेकंड, आई हैव समबडी एट द डोर. just give me 1 moment.
Okay, I'm back. I'm sorry, it's a Sunday, so कुछ लोग आ जाते हैं कभी-कभी, you know. So थोड़ा I had to spend few minutes on that. Yeah, so we were able to understand the fact that the channel of sending the information was also very important. ठीक है? The person who's receiving the information should be able to hear you or read the message properly. आपने WhatsApp पे message भेजा लेकिन सामने वाले का इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा है. Email भेजा but he is not able to or she is not able to receive the information correctly. So that's the problem at the receiver's end. So you'll have to have the understanding for that as well. Okay. And the most important part, during the communication, if there are any situational challenges, जैसे कि noise बहुत है, पीछे बहुत शोर आ रहा है, आप बात नहीं कर पा रहे फोन पे, या सामने से आप बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं, आपकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही. So आपको अपने आप को उस हिसाब से मॉड्यूलेट करना पड़ेगा अपने communication को, so that you can at least send the information to the person. And when the person receives, he or she is or is not able to understand your question, and अपनी understanding के हिसाब से वो answer करेगा, and you'll have to be in a situation to to understand what they are saying as well. हो सकता है वो हिंदी में आंसर दे या किसी और लैंग्वेज में आंसर दे या उसका नाम ऐसा है जो आपको पहली बार में समझना है. So these are the things that we need to be understanding of while creating a communication channel. ठीक है? Okay, I would not go into the perception part. We have discussed this in detail. I would not go into the effective communication steps. हमने देख लिया था कि हमारे पास ये 7 steps हैं जिनको हमें follow करना है. Not that you have to learn this. You just need to be able to understand कि हमें बहुत ही basic mannerisms के साथ बहुत ही clear और limited sentence create करके अपना communication complete करना होता है. Now we'll start with the types of communication. So in detail, if you have to talk about types of communication, it includes the communication channel and the style. Okay, so it is verbal, non-verbal, formal, informal communication. I'm sorry, I was not able to look at the chat. Yeah, Nisar, you typed a few minutes back. It's a language barrier, correct? If you see I'm not able to look at the chat, you may want to interrupt me and you can tell me what you want to say, because it's very difficult to look at the screen and chat as well. So thoda challenges ho jate hain isme. One more. Let me just fix it up. All right, verbal communication is the most common type of communication. Now, that includes spoken words, sign language to share the information. So whenever you talk to somebody, you need to make sure that you not only are talking to that person in language, that is the vocal language, Hindi, English, Punjabi, Urdu, whatever. You will need to make sure that you use proper signs as well. In case if it is required, if the person is very far off, you might need to raise hand to attract his or her attention as well, right? Shouting it out to that person will not help. So this is where the vocal and non-vocal communication in a personal communication environment helps. Okay. So if your job involves conducting business meetings, give presentations to the client, then make sure that you have verbal communication skills. यही हम इस बारे में बात कर रहे हैं. ये सेशन जब तक एंड होंगे तब तक हम इन डिटेल्स को काफी गहराई से समझ गए होंगे कि हमें अपने किसी भी टाइप का अगर हमारा जॉब हो, अगर उसमें बिजनेस मीटिंग्स या क्लाइंट से बात करना इन्वॉल्व है, तो हमें वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे चाहिए होंगे. यहाँ पे अच्छी लैंग्वेज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स की बात हो रही. If you are concerned about the language, then we'll focus on grammar, listening, reading, and writing skills, sentence construction, pitch, right? And body language as well. Okay. Any questions on this as such till now? You can give me you can give me a message in chat as well. सर बॉडी लैंग्वेज से पहले क्या बोले? बॉडी लैंग्वेज से पहले क्या बोले? वर्बल कम्युनिकेशन
science, behavior. Are you writing it? See, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे if your job or if your work demands to conduct many business meeting, मान लो आपको कई सारे client से मिलना पड़ रहा है, presentations देनी पड़ रही है या phone calls करने पड़ रहे हैं, तो आपसे ये expect किया जाएगा, आपसे ये उम्मीद रखी जाएगी कि आपकी verbal communication skills या आपका बातचीत करने का सलीका जो है वो औरों से बेहतर हो ताकि लोग आपकी बात ध्यान से सुनें. इसमें आपको body language, sign, using gestures, it also is a part to it. Using English is a part of it, of course, but that is a part of language. We are going to be learning the grammatical part, sentence construction, reading, writing skills, pitch. हम कितनी ऊंची pitch पे किस लहजे में बात करते हैं, किस ऊंचाई पे जाके हम बात करते हैं, या कितना नीचा बोलते हैं, that is also a part to it depending upon the situation. तो इस बारे में भी हम सीखेंगे. ठीक है? Absolutely. Usman, you're right. For this, we need to understand the language first. The challenge is, in most of the situations, we need to go through the basics. So when we, language is the first impression, as you're saying. So when you learn what you want to say, you can practice language and you can learn it the entire life. Now, the primary concern that people have is they want to learn English, and in order for us to learn English, we need to go through the practice sessions for it. And we are going to be doing those practice sessions. After this session that I'll complete today, I'll be sending, the practice material that is being created by the, by the organization. So it's a process जो कि हमें lifetime learn करना होता है. We can keep going through the basics, and as we improve on a daily basis, we see the changes in ourselves. We cannot go from point A to point Z or point Z, I would say, in day one. So हम gradually चीजें सीखते चलेंगे जिससे कि हमें understanding हो जाए कि हमें जो चीज आ गई है उसे हमें present कैसे करना है. We cannot be a great presenter in a day. So दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी. But thank you, Uzma ma'am, for asking this question. Okay. और कोई सवाल किसी और से कोई और पूछना चाहे तो? Okay, I have a question here. आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं जहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, एम्प्लॉयर वुड एक्सपेक्ट यू टू हैव गुड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स. ठीक है? सो इस एक्सपेक्ट की जगह क्या हम कुछ और यूज कर सकते थे? लेट मी राइट इट डाउन हियर. नीड. ठीक है, बिल्कुल ठीक. और बताइए. मैंने चैट में 3 वर्ड्स लिखे हैं. यू वुड वांट टू चैट में पर्सनल में तो नहीं चला. मैंने एवरीवन. मैंने ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है मेरी स्क्रीन पे, उसमें जो लास्ट सेंटेंस है उसमें लिखा हुआ है एम्प्लॉयर वुड एक्सपेक्ट यू टू हैव गुड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स. सो इसके एवज में मैंने 3 वर्ड्स लिखे हैं चैट में. करेक्ट, एब्सोल्युटली, इट्स एक्सपेक्ट. बिल्कुल ठीक है. Now, this is just to tell you the difference between the words that are sounding similar. जो हम अंग्रेजी जुबान की बात करते हैं, जो हम कहते हैं कि हमें सीखनी है, उसके लिए हमें ऐसे बेसिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन में हम इस चीज को पढ़ पा रहे हैं. ठीक है? जितने भी लोगों ने मुझे पिंग किया या जितने भी लोग इस समय मुझे देख रहे हैं लेकिन पिंग नहीं कर रहे हैं चैट पे या आंसर नहीं कर रहे हैं, वो लोग ये देख पा रहे हैं कि सामने एक्सपेक्ट लिखा हुआ है और उसमें of course seems to be same, yeah, for different people, right? So it will be expect, accept and accept. So a जो first word में है वो is a small sound, is a larger sound, and again the third word is as first as the first one, as good as the first one. ठीक है? जितनी short sound first की है उतनी short sound third की भी है.
सो पहले दो हर्फ जो हैं, पहले जो शब्द जो हैं वो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन बाद में प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है क्योंकि उनके स्पेलिंग भी चेंज हो गए, ठीक है ना। सो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके बारे में हम आगे लिख सकते हैं। अगर आप यही चीज किसी को बोल के समझा रहे होते तो हो सकता है कि आप एक ही जगह दूसरा वर्ड यूज कर देते। आई एम नॉट सेइंग कि आप कर देते, मैं जिस सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, एंड देन यू वुड हैव चेंज्ड द एंटायर मीनिंग ऑफ इट। You know what I mean? So when you learn any language, it's very important to learn the basics of it, as to how important it is to write and speak the right word. हमें बहुत बड़े बड़े वर्ड्स नहीं सीखने हैं पहले शुरुआत में, हमें पहले छोटी चीजों से मैदान मारना, ठीक है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स. So in order for us to earn low hanging fruits, we need to make sure that we are learning the basic grammar. और कल मुझसे किसी ने पूछा था, आई थिंक चैट पे पूछा था, आई थिंक उस्मा मैम ने इसका आंसर भी सही दिया था कि in order for us to learn language, we should be reading books. How would that help? That help in the fact that you will be able to see more words, you will be able to understand the concept in which the word has been said. और उससे आपका रिटर्न कम्युनिकेशन बहुत इंप्रूव हो जाएगा. वर्बल कम्युनिकेशन ग्रेजुअली इंप्रूव होता है वर्बल की प्रैक्टिस करने से. Indeed, Uzma ma'am. So I started off by reading newspapers, as I said, because during those days, what used to happen was, उन दिनों ना बहुत ज़्यादा, I was very young, I was like 17, 18 years old, and I used to be interested in news and politics and current affairs. अब क्या होता था, टीवी पे बहुत तेजी से न्यूज चले जाते थे, एनडीटीवी हम देखते थे उन दिनों, सो बहुत स्पीड में जो लिंग्विस्टिक स्किल्स थे उनके इतने अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं, कि वो बहुत तेजी से अपनी बात कह के चले जाते हैं, कई चीजें हमें समझ में नहीं आती हैं. और उन दिनों ऐसा नहीं होता था कि हम टीवी को रिवाइंड कर लेते थे या रिकॉर्ड कर लेते थे, दैट वाज लाइक 18-19 years back I'm talking about. So I started reading newspapers and English newspapers हम उसको बहुत डिटेल में पढ़ते थे, and then my interest started in reading books. I started to read fiction, I started to read autobiographies, I started to read religious books for that matter. Trust me, it gave me so many insight about the way people communicate in a particular language. उससे मेरी language बहुत improve हो गई, and that gave me an inspiration to study shorthand as well. Although उसका इससे कोई connection नहीं है, but while I was learning shorthand, since it's related to phonetics, let me write this down for you. Phonetics is basically what we hear as per what we say. So oh my God, somebody's shouting, somebody needs to go on mute. Okay. So learning phonetics, I'll tell you about it later, can also help a lot in learning English language for verbal skills. So like Usman said, we would be doing a lot better if we start reading. क्या होता है, हर किसी का रीडिंग के इंटरेस्ट अलग होते हैं, right? For example, I have 20 participants on the screen. I can bet on it that every participant has different interests in their lives. किसी को कुकिंग पसंद है, किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को बाइक, किसी को कार, किसी को पॉलिटिक्स. Somebody is interested in technology, किसी को करंट अफेयर्स की न्यूज पसंद है, किसी को मूवीज और टीवी सीरियल्स का भी शौक हो सकता है. तो आप उससे रिलेटेड मटेरियल अगर पढ़ते हैं, किसी को डिस्कवरी चैनल पे आने वाले प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ने का, जर्नल्स पढ़ने का शौक हो सकता है. सो इफ यू डू वन थिंग, इफ यू जस्ट बाय वन बुक इन अ मंथ, डोंट गो फॉर पायरेसी. पैसे दो और बुक खरीदो, ठीक है. वैल्यू द वर्क दैट यू आर गोइंग टू बी स्टडीइंग फॉर. रीड इट ऑन अ डेली बेसिस, सोने से पहले या जब भी आपको टाइम मिले. ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू इम्प्रूव यू अ लॉट. इन द मॉर्निंग, रीड द न्यूज़पेपर. While you go off to sleep, try to read few pages of a book and complete the book. Only then you keep it aside. ठीक है. Somebody would want to know about money making tips. So आजकल मनी मेकिंग के लिए भी बहुत सारी बुक्स बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स ने लिखी हैं. जॉब, हाउ टू क्लियर गुड जॉब इंटरव्यूज, हाउ टू मेक गुड इंप्रेशन ऑफ योरसेल्फ. सो जब आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कोई बुक पढ़ेंगे और वो अंग्रेजी में होगी, तो जाहिर सी बात है आपकी अंग्रेजी भी बेहतर होती चली जाएगी. उसमें मैम, डू यू एग्री टू व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. Criminal news, yeah. My God. So
Well, it's a very very valid point. Uzma ma'am ने एक बात बहुत अच्छी लिखी है that criminal news is something that people get interested into. So whatever we are talking about is in a very healthy context of things. ठीक है, आप क्रिमिनल न्यूज को लेके आप क्रिमिनल जर्नल्स पढ़ सकते हैं, या अगर आप लॉ की लाइन में हैं तो उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं तो सिर्फ ऐसे न्यूज अच्छे न्यूज चैनल्स पे देखे जहाँ पे चीजों को बहुत पॉजिटिवली और डिटेल में एनालाइज करके अच्छी लैंग्वेज में बताया जाता है। आप एक एक सेंटेंस एक एक फ्रेम से काफी कुछ सीखेंगे, और जैसे मैंने अपने टाइम में किया था, मैं एडवाइस सबको देता हूँ, we should write those things down, and then now we have the power of internet with us, we should search things on the internet, we'll get so many answers. First we must use to first we must get used to it, उसके बाद हम उन चीजों को अपनी पर्सनल लाइफ में भी यूज करना शुरू करेंगे। ऑफ कोर्स हमारी इंग्लिश बहुत बेहतर होगी। क्रिमिनल न्यूज ऑफ कोर्स इट्स मैं बहुत ही लाइट वे में कह रहा हूँ कि जो उससे रिलेटेड जो सनसनी टाइप के प्रोग्राम आते हैं ना, वो मत देखिएगा। ठीक है, अदरवाइज आप लोग परेशान हो जाएंगे। सो या, न्यूज इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव वे टू लर्न लैंग्वेज। ऑफ कोर्स इट माइट डिप्रेस यू, बट डोंट टेक इट अदरवाइज, it will definitely improve your language for sure. Okay. Okay, so that was about verbal communication and written communication. Non-verbal communication involves passive communication through the use of gestures. जैसे कि हमने बोला, आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ लिख रहे हैं। ठीक है, आपके पेरेंट्स ने बोला कि डू यू वांट टू स्टडी, आप क्या बोलेंगे? नहीं, मुझे नहीं पढ़ना है। बट हम इतना डिटेल में अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते ना, हम सिर्फ छोटा सा मुंह बना देते हैं, मैं नहीं पढ़ूंगी या मैं नहीं पढ़ूंगा, हम कहते हैं ना ऐसा। तो क्या है, कम्युनिकेशन ही तो है, बट दैट्स अ वेरी पासिव कम्युनिकेशन। आपके पेरेंट्स को ये समझना पड़ता है कि आपकी डॉटर या आपका सन क्या चाहता है। उन्हें इतना आइडिया तो लग गया कि ये नहीं पढ़ेगा, आज ये पढ़ाई नहीं करेगा। कई बार बॉस हमें कहते हैं यार ये प्रेजेंटेशन बना दो, तो हम उसका ऐसे ही मुंह फेर लेते हैं, हम इशारा कर देते हैं यार कि मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। तो बॉस को ये समझना पड़ता है कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। सो दैट्स नॉट वेरी इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन इफ डन सिंगुलरली। अगर हम सिर्फ जेस्चर से ही बात करेंगे या लैंग्वेज या फेशियल एक्सप्रेशन से ही बात करेंगे, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज का मैंने एग्जांपल दिया, so that might not be the complete and the right way to communicate. It is a passive way to communicate. So rather than being passive, you should be active. Active और passive में क्या difference होता है? Can anybody ping me? Can anyone ping me? Chat में active and passive में क्या difference होता है? Subject object differences, that is correct. We focus on subject in the first one and second one in the object. That's very technical. So now yesterday we had an example. Somebody was asking, I think Uzma ma'am asked what is jargon. So jargon is the technicality. आप technical language में जब बात करते हैं, now यहाँ पे हम English सीख रहे हैं, तो हम English के कई technical terms भी सीखने पड़ेंगे जो जिस पे हम आगे focus करेंगे. So Nisar had a very very to the point answer to it, that active and passive are actually subject versus object differences. ठीक है ना? Very good Nisar, I appreciate that. So Mondays को हम बहुत active होते हैं, Sundays को हम passive होते हैं. Not like that. Active means we are directly, focusing on the thing that we want to talk about, or we want to discuss, or we want to solve. Passive is just that indirectly we are focusing towards it. Okay. Okay. By the way, can somebody give me another example of the confusing words? जैसे expect और expect का हमने किया था. ये बहुत important है guys. ये हमें सीखना बहुत जरूरी है. Yes. Yeah, please go ahead. Carrier and carrier. That's great. Super. Right and right. Absolutely. Or not. Hair and hair. Wonderful. Leaves. Yeah, go ahead. Somebody wants to say something. Mills.
Hour and hour. Like grapevine or something? Correct? Is that 1 second? Yeah. Okay, Tariq Mills, you were saying something? No, I wasn't. Sorry. That's all right. That's all right. Okay. Yeah, look at that. Bear, beer of super. Yeah, you don't have to say much on that. You just write it down, beer, and that's fine. Everybody understands that. Waste and waste, super. Leech and leech, like I said. Fur and fur. Let me write this down. Fur is of tree and fur is of an animal. Good and goods, yeah. Absolutely. Leave and leaf, correct. Super. Career versus career, yeah. But let me tell you this, we'll have to understand कि हमें इसमें problem कहाँ पे आती है. अगर हमारे verbal और written communication, then and then, oh my god, this is the most notorious one. Then and then, बहुत लोगों को इसमें problem आती है. Right, this was required. Guys, I've seen most of the people facing a challenge here with then and then. ठीक है. Whole and whole, there and there, two and two. जैसे कि स्कूल में हम कहते थे टू और टी डबल ओ को बोलना है तो हमें उस पर जो लगे टू बोलना पड़ता था, बट नो, इट्स द सेम. There are certain exceptions as well, but exceptions doesn't change the rule. Okay, so career and carrier, these two are pronounced a little differently. Yeah, if you want to go up in your career, then it's going to be pronounced like that. And this is a carrier that is coming with me, there and there, two and two, r and hour. Yeah, so pronunciation का थोड़ा फर्क आ जाता है, r and r. So if you're able to make it out, you'll be able to understand that. But yeah, it's very close. Wonderful. So these are the wonderful examples that we have here. Seam and seam, SEAM and SEEM. कोई भी चीज seamlessly करना और कोई भी चीज आपको अगर ऐसा लगता है, so there's a difference between seam and formally and formerly. आप कोई भी चीज formerly करते हैं यानी पहले करते थे, formally यानी औपचारिक रूप से कर रहे हैं. lie lay. Correct. Lie down, lay down. इसमें टेंसेस का फर्क आ जाता है. Illicit and illicit, छुपा हुआ और illegal, the way you want to take it, you can have a look at it. Books में internet पे find out कर सकते हैं इसकी detail. I would not go into detail of everything. कुछ चीजें ऐसी होती हैं, being mature adults, we'll have to find things ourselves. So yeah, this is right. Steel versus steel. A can of worms, Coca-Cola ka can, and can I do it or not? Meat. Explicit, implicit.
ओके एक बड़ा ही कॉमनली जो एक वर्ड यूज होता है वो है ऑल टुगेदर, वैसे आमतौर पर एंड ऑल टुगेदर, सारे एक साथ. So these two are different things. Great. Thanks for doodling on the screen. Okay, the next is फॉर्मल कम्युनिकेशन. मतलब जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, इसमें जो अभी हमने प्रैक्टिस की वो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली व्हेन यू राइट डाउन एन ईमेल. इट्स डिटरमिन्ड, इट्स बीइंग डन थ्रू ए प्री डिटरमिन्ड चैनल. पहले से डिसाइडेड एक चैनल होता है जिस पे हम बात करते हैं. जैसे कि ऑफिस में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग इन चीजों की होती है कि वी आर गोइंग टू बी कम्युनिकेटिंग ओनली ओवर ईमेल्स. ठीक है. कभी यहाँ तक देखा है कि किसी ने बोला हो कि यार ऑफिस में एक काम करते हैं, हम स्नैपचैट पे बात करते हैं या व्हाट्सएप पे बात करते हैं, एक काम करो ना, ठीक है, प्रेजेंटेशन को ना मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो. ऐसा नहीं होता है. ठीक है ना. अगर आपके बॉस ने आपको बोला है कि आप एक पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन या एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा उनको ईमेल करेंगे, तो आप ईमेल ही करेंगे. आप उनको व्हाट्सएप नहीं कर सकते. आप उनको यू कैन नॉट जस्ट टेक द प्रिंट आउट ऑफ द प्रेजेंटेशन और उनके टेबल पे जाके रख दो और उनको फोन करो. Somebody needs to go on mute or I'll have to debar you from the session, guys. If you don't want to study, you may leave. If you're not talking, you better stay on mute. So so official language is about email communication and predetermined channel. ठीक है ना. अब चैलेंज ये आता है कि इसमें सेंटर एंड सेंटर, रमीज, या सॉरी, आई लुक्ड एट द चैट जस्ट नाउ. करेक्ट. So we have very wonderful examples that have been given to us. So इसमें ना मुझे एक बहुत सही डायलॉग याद आता है. हमने स्लम डॉग मिलियनेयर सबने देखी है, तो उसमें एक डायलॉग आता है, आई एम सो लकी बिकॉज आई एम एट द सेंटर ऑफ द सेंटर. ओके, यू सी दिस. अब इसमें क्या आएगा, हमें ये आपको बताना पड़ेगा. Have you tried the Travis Scott meal? It's very good. At the center of the center. It's going to be, दोनों में एक ही वर्ड आएगा, एट द सेंटर. उसमें जो CENTER और बाद में एंड में भी CNTR ही आएगा, बिकॉज इट्स द सेम सेंटर दैट दे आर टॉकिंग अबाउट. केंद्र बिंदु जिसे हम हिंदी में कहते हैं. सो जस्ट वांटेड टू शेयर दैट विद यू. ओके. Informal communication, it's a grapevine. Do we know what grapevine is? Can anybody want to, what is grapevine? Want to take a wild guess? ये वर्ड मैनेजमेंट में बहुत यूज होता है. I heard it from the grapevine. So grapevine ka, it the meaning of this word is अंगूर की जो बेल होती है. So अंगूर की बेल जो होती है, it doesn't grow in a linear form just like a tree. It goes from left to right and it kind of travels everywhere, right? We cannot have a specific trunk based development for grapevine, right? So what are we going to do here is we are going to follow grapevine for communication at personal level. We are going to be following grapevine at a personal level. So हम
किसी से भी कुछ भी सुनते हैं और उसके बाद we understand the fact that the communication actually went this way and we understood it in different manner. ठीक है ना? So these two are different things. Dhaval, can you remove JO from this chat? I just did that. Okay. I was just trying to do that, but somehow my system didn't support me. But it has just happened now. Okay. I guess it's in. Okay, I guess it's gone. All right. I thought I was a student. Okay, no problem. So grapevine communication is mostly unintentional. क्या होता है कि हम डायरेक्टली जिस तरीके से बात नहीं कर पाते ना, हम unintentionally किससे बात करते हैं. हम कहते हैं अपने फ्रेंड्स को चलो यार ब्रेक पे चलें, प्रमोशन डिस्कस करते हैं. आप प्रमोशंस होने वाले हैं नहीं होने वाले हैं नहीं पता. ठीक है, आपने स्कूल या कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेलने जाते हैं, वहां पे आप अपने मार्क्स डिस्कस करते हैं. यार मेरे एग्जाम में इतने मार्क्स आएंगे क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया है. Then somebody else, some friend comes and say, यार उसको छोड़ो यार, so let's focus on football. So during informal communication, you were able to send some messages through, which may be correct, may be incorrect, right? But that's a very popular method of communicating with people. जैसे कहते हैं ना लोगों को through बात फैलाना, right? So that's what it is. So that's unofficial grapevine method. It can be, verbal. It can be, through chat. Chat is also a type of written communication, but for the sake of example, unofficial, I am just considering it a verb, informal and verbal communication. ठीक है, क्योंकि बहुत ही फ्री फ्लोइंग होता है, उसमें कोई रूल्स फॉलो नहीं होते, उसमें कोई फैक्ट्स नहीं होते. सो इट कैन बी ट्रू, इट कैन बी इनकरेक्ट. सो जैसे जैसे आप आगे करियर में जाएंगे, यू हैव टू बी वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड वी विल हैव टू बी वेरी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपके पास ग्रेपवाइन से आ रहा है या अनऑफिशियली किसी से आ रहा है, तो क्या उस पर ट्रस्ट करना या नहीं करना. ठीक है, ओके. Shall we move to next slides? इस पे कोई क्वेश्चन है आपके? Do you want to talk to me about anything? Okay, before we go any further, I would recommend that we should take a 10 minutes break. Please do not disconnect the call. Just go on mute. Just go on mute. I'll join you guys in next 7 minutes. Okay, I'm here. Screen is set to not share and I'm available. Everybody stays here, nobody leaves. This is that 10 minutes break. In the meantime, I would want to talk to Ravi. Is Ravi here? No. So do we have Mr. Mohammed Saad? Yes, sir, I'm here. Yeah. Okay. Yeah. Can you probably call me on my cell number, sir? Yeah, sure. Thank you, sir. See you guys in 7 minutes.
All right, welcome back, folks. We can get started now. So we discussed these in details. Any questions? Can you reshare your screen? I mean, after without sharing and share again. Without sharing what? One I second. mean, You want me to reshare the screen? Can you see Yeah. it now? yes, yes. Okay, okay. Is everybody able to see my screen now? Okay. Just let me know if you're not, okay? Okay. So as we discussed, verbal communication can be divided into visual, written, and oral communication. अब कितने टाइप के विजुअल कम्युनिकेशन हमारे पास होते हैं? ऑफिसेज हम क्या यूज करते हैं? सारा दिन हम लोग बेसिकली ग्राफ्स, चार्ट्स, फोटोग्राफ्स यूज करते हैं. मेनली हम लोग ग्राफ्स यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि विजुअल कम्युनिकेशन में जो हमें अपना मैसेज पहुंचाना होता है वो नंबर्स के फॉर्म में पहुंचाना होता है. वी वांट टू शो टू द लीडरशिप एंड वी वांट टू शो टू आवर बिजनेस पार्टनर्स दैट अगेंस्ट द टारगेट दैट वाज गिवन टू अस व्हाट हैव वी अचीव्ड. अगर हमें किसी प्रॉफिट मार्जिन को मे बी 10 लाख रुपीज तक अचीव करना था तो हम ग्राफ में उसका 10 लाख के सामने 15 लाख का अचीवमेंट शो करेंगे जो हमने अचीव किया है, सो दैट वी कैन एक्चुअली क्रिएट अ पैरेलल कि हम उनको ये बता सकें कि हमने 10 के सामने 15 अचीव किया. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन. ठीक है. विजुअल कम्युनिकेशन इज डिफरेंट देन रिटन एंड ओरल. रिटन इज प्लेन राइटिंग, आपने सिर्फ लैंग्वेज में लिखा एंड द मैसेज इज सेंट मेनली थ्रू ईमेल. फोटोग्राफ्स, maps, logos, all these things are जैसे कि हमने यहाँ पे semiotic का एग्जांपल लिया था. I would want to go back few slides for a second. यहाँ पे हमने देखा था साइन, सिंबल एंड सेमियोटिक कन्वेंशंस. ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था कल. सो सेमियोटिक कन्वेंशंस जो हैं वो विजुअल कम्युनिकेशन का पार्ट है. Mohammed Saad, okay, let me just stop sharing. That's what I did. Okay, are you able to see my screen now? Does it look better? Yes, yes, yes. Thank you for the tip. Okay. Now, visual communication has face-to-face, the way we do Zoom calls. Stock footage means something that you've taken from somewhere, okay? And you're sharing it. जैसे recorded videos हो गए, जैसे हम training sessions में videos चलाते हैं कई बार. So that's a form of visual communication. ठीक है. Data visualization जैसे कि हम Excel में चार्ट बना के शो करते हैं that against the target of 10 lakhs we have achieved 15 lakhs. फिर उसको हम ग्राफ में भी शो करते हैं. Infographics जैसे कि मैंने बोला. So whiteboard animation, GIFs animation, all these things. So this is very simple. We would not need to go in detail for this. Anybody have any question? In fact, अगर आपके पास कोई point हो that you want to share with the team that I have forgotten here, you can tell me about it. It's a very interesting topic, the visual communication part. All right. I take it as a no. अब हम दूसरे लेवल पे चलते हैं. हाँ. Okay, written communication. This is my favorite. Although I like to speak to people more than I like to write emails, but this is most important thing that I have studied in my career. कि अगर आपका written communication strong है, तो आप बहुत चीजें you can win. जैसे कि हमने कल एग्जांपल लिया था कि कुछ लोग आज की तारीख में ईमेल्स ऐसे लिखते हैं जैसे कोई इंस्टाग्राम पे या स्नैपचैट पे या फेसबुक पे अपना स्टेटस डाल रहे हैं. That's of course not the right way to do it. ठीक है. The communication for every
channel that you use to send your message through should be different. अगर आप WhatsApp पे मैसेज लिखते हैं तो वो अलग तरीके से लिखा जाना चाहिए. अगर आप ईमेल लिखते हैं, that should be different. So is the case with social media. So that's what they are trying to say. Even for that matter, when we write text messages, it should be only bullet pointed. Now, there are certain examples that we can learn from: memorandums, reports, bulletins, various descriptions. So these are the things that we can study and learn how written communication is done. But let me tell you this, our focus should be to learn how to write a message in English language rather than how to write a type of message. हमें memorandum लिखना, report लिखना, email लिखना नहीं सीखना है. हमें कोई भी मैसेज इंग्लिश में कैसे लिखा जाए ये सीखना है सबसे पहले. ठीक है, तो इसके पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मैं पिछले 2 दिन से आपको बोल रहा हूँ क्या है. इफ यू वांट टू राइट अ गुड ईमेल और इफ यू वांट टू राइट अ गुड मैसेज टू समवन, चाहे आप पोस्ट कार्ड पे लिखिए, चाहे आप पेपर पे लिखिए, चाहे ईमेल पे, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग that you should have in your message? You can type that in the chat. Anybody can take a shot at it. Let me rephrase the question. Absolutely, Usma ma'am. Grammar. So yes, grammar. Now, grammar is a detailed concept. It's an aspect that you need to think about, right? The way we say, अगर यार सड़क पे चल रहे हो ना तो गाड़ी ध्यान से चलाना. ध्यान से चलाना is a very wide spectrum word. उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? Make sure that you are wearing your seat belt. Make sure that your car is well serviced. You're driving in the right lane. You're driving under the speed. So many things. So of course, anybody want to take a shot at ग्रामर? ग्रामर में क्या क्या चीजें आती हैं? क्योंकि जो चीजें आएंगी जिनको हम प्राइमरी इंपॉर्टेंस देंगे, फोकस करेंगे, वही चीज हम यहाँ पे सीखेंगे and we'll improvise on that, right? Grammar is most important aspect. Yeah. What in grammar? Okay, मुझे लगता है मुझे इंडिविजुअल्स के पास जा जाके पूछना पड़ेगा. ठीक है, let it be. Correct punctuation, correct tense, and other things. Absolutely, Talha, you are right. Tense. Uzma ma'am has also typed tense. Punctuation marks. We have already spoken about it. Great. Great. Yeah. So it starts from punctuation marks, tense, and small sentences. देखिए, हमें एक aspect समझना बहुत जरूरी languages का. When I started off my career, almost 20 years back, I started off with banking. Then I moved into BPO, and I was serving international clients in banking processes. It was a voice process. I used to coach people on voice communication, on accent and native languages and all that. Then I realized that while I was teaching others, I was facing the same problem. And that was, I used to speak long sentences. आज भी होता है कई बार. ऐसा पता है क्यों होता है हमारे साथ? क्योंकि हम जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लोग हैं ना, जो पूरा साउथ ईस्ट एशिया है, हम लोगों को कोई भी बात बहुत ज्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स डाल के बोलने की आदत है. While English is coming from the western side of the world, वहां पे काफी चीजें जो हैं बहुत ही डायरेक्ट तरीके से बोली जाती हैं, but in a very polite state. So over the years जो हमें चीज सीखनी पड़ती है, सबको सीखनी पड़ती है. क्यों नए बच्चे जो कॉलेजेस से आते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज से हो, चाहे वो किसी और कॉलेज से हो, क्यों वो जो सेंटेंसेस लिखते हैं वो पूरे कहानी की तरह होते हैं? Because nobody has told them that way. So we have to tell them that you need to get out of the bottleneck situation. ठीक है, जो आपके दिमाग में थॉट्स का bottleneck चल रहा है, आपको उसको साइड में रखना है और आपको एक बार में एक थॉट प्रोसेस करना है. जब आपके थॉट्स क्लियर होंगे तभी आप ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बना पाएंगे. Otherwise you'll try to add 2-3 situations or 2-3 things or 2-3 thoughts in a single word. A host can disable this notation so that no one can use this pen tool. ठीक है, बढ़िया. Dhaval, can I pitch in, please? Farooq sir, yeah, good morning. Please do, sir.
ये कौन साहब है जो अपनी बात दिखाना चाह रहे हैं? There was someone with an anonymous name. I just removed him. Why don't you throw him? Sir, I have already removed him. तो ये अब फिर कहाँ से आ गया ये? सर ये दूसरा है। कौन ये जो इनवाइट गए हैं इनको जरा आप नोट कर लीजिए कौन कौन है ये, किस किस को इनवाइट किया है, कौन ये नोटेशंस बना रहा है, और उनको फिर बाद में आप कॉल कीजिएगा। Okay, sir, sure. सेशन हो रहा है ना, मजाक थोड़ी है। अगर आपको यही गंदगी यहाँ फैलानी है तो फिर आप बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। Sorry, Dhaval, go ahead, please. No problem, Farooq sir. Thank you. Yeah. So where were we? Yeah, the sentence construction challenges. I had a question to the forum. Adnan, you may go on mute. Okay, I muted him. Okay. So the most important aspect is grammar in written communication. So I would recommend everyone to focus on small sentences, right? So if you have to say a particular word, you will have to exemplify it. I have some examples. I don't have the time to give you that example at this point in time, because I would want you to write that down in the chat. कि एक छोटा सा paragraph लिखिए, and then we can kind of discuss it. But I don't have that much of time. But my focus is going to be on small sentences. Oh, 1 second. Let me just go ahead and share the screen here. Okay. The third is oral communication. So oral communication has also the same challenges. The only thing is that we don't see those challenges, we just feel them. अब क्या होता है कि there are certain words and languages that we language and word that we use for passing on the language, the intended message. Oral communication में सिर्फ spoken words को ही use किया जाता है. However, there's a different aspect to it. For example, you and I are talking on this forum. We are using the audio. So I can only communicate you using the language that I use. So I'll have to make sure that you are comfortable in the language that I speak, or I should also be comfortable in the language that you speak. It could be English, Hindi, Urdu, Punjabi, or any other language that you think you can speak well and you can communicate with me on. And basis my understanding of that language, I'll be coming back to you with the answer. Now there's a risk. The risk is, like we've discussed, perspective, understanding of the words of a particular language. Pronunciation, that is the most important part. Just like the phonetics, we are going to be working on pronunciation as well. Guys, it's not pronunciation, it's pronunciation. ये हमें कहीं बार देखने को मिलता है, so I just wanted to tell you about it. ठीक है? So इसमें सबसे बड़ा challenge इन्हीं चीजों का आता है. So oral communication is only spoken words, but let's assume if I have to switch on the camera, if everybody were to be available on the camera, don't do it as of now, but उसमें क्या होता, आप, if I was talking to you, you would have definitely raised your hand and you would have made a gesture at me, and I would have seen, okay, there's somebody else on the opposite side of the screen. I can see that person in the camera, he or she wants to say something. So अभी क्या है, अभी हमारे पास option नहीं है. The only difference is that you can click on the button of raising the hand and I look at it. So it's almost the same creation, in the software. But I'm just trying to give an example that when you look at someone and speak, the communication is totally different, and there is a lot of facial expressions, a lot of gestures that come into play. But while we talk to them, the only thing that can help us is probably the right, set of mind and right set of language. And in some cases, अगर आप उस बंदे को नहीं देख पा रहे हो तो कम से कम अगर subtitles बीच में आते हैं तो वो हमें help कर सकता है. Teams में option है. When we speak, there are subtitles that come. Just giving an example. Okay? So that's how it works. So oral communication can be decoded well only if both the parties are able to listen to the message correctly, able to understand the language correctly, and are able to understand the message that is hidden behind the language. ठीक है? अगर आप अपने बॉस को कहते हैं कि बॉस आज मैं ऑफिस नहीं आ रहा,
तो उसे सिर्फ इतना ही मैसेज सुनाई दे रहा है कि ऑफिस नहीं आ रहा, he might would want to ask you why. ठीक है, there's another channel of communication that has just opened. Now you are going to be giving the reason कि आज मेरे घर पे कुछ काम है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, so on and so forth, right? But if you are in front of your boss, you look very tired, right? And you have that sorry face, and you are not able to, do your things, and you have fever and everything, and your boss will say, hey, what happened to you? You will say, boss, I'm tired. And what will your boss say? Go home, don't come to office tomorrow. So there's a total difference between the way it got communicated between the two parties. Why? One was only audio, second was audio and visual both. You were in person, right? You were talking to that person in front of him. So the same message went in a different manner. So whenever you communicate with someone, you have to understand this aspect that if the person is not in front of you, probably he or she will take your message otherwise, right? He would probably not get what you're trying to say if he would have a different perspective about you, a different perspective about your situation. Yes, no, maybe? Any questions, suggestions? Anything you want to say? Anybody? Sure. So there are two ways. Usman, I can repeat. So there are two ways. Let's assume that you are doing an oral communication. किसके साथ आप oral communication कर रहे हो? आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन जब करते हैं तो आपकी जो सिचुएशन है या आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं या आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपके रिसीवर पर, आप सेंडर हैं, आप मैसेज सेंड कर रहे हैं तो आपके रिसीवर पर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। पॉजिटिव इम्पैक्ट का मतलब ये नहीं होता कि वो आपकी बात मान ही जाएगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट का मतलब है कि आपका कम्युनिकेशन क्लियरली हो रहा है या नहीं, उसकी बात कर रहा हूँ। So if you say that I'm not well, I'll not be able to come to office, and probably your boss will look at you and say, yes, I can see that you're not well. I can see that from your body language, from your gestures, and the tone or the pitch that you are using in front of me. I think you are really not well. You should go home, right? So that's the difference between oral communication that you actually did in front of the person that you're giving a message versus अगर आपको किसी को फोन पे वही बात बोलनी होगी and say, boss, good morning, I'm not well, I'll not be coming to office. The boss will get frustrated. Why? In the morning at 9 a.m. you're calling me and stating that you cannot come to office. You'll have to come to office. We have these many things that we need to do. Probably वो आपकी बात सुनना ही नहीं चाहेगा कि आप क्यों नहीं आना चाहते। ठीक है, ऐसे challenges होते हैं. So you'll have to understand the fact कि उसमें रिसीवर जो आपको मैसेज रिसीव कर रहा है उसकी कोई गलती नहीं है। उसमें क्योंकि हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे विजुअल नहीं है, इसलिए वो ओरल कम्युनिकेशन को सुन के ही आइडिया लगा रहा है, एंड दैट्स हाउ द कम्युनिकेशन इज गेटिंग कंप्लीटेड। सो आपको अपनी टोन, पिच, अपने फैक्ट्स जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं या मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो यूज कर रहे हैं वो आपको उस तरीके से यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट द कम्युनिकेशन इज क्लियरली गोइंग टू द अदर साइड. There is no regression or iteration what do you call it, coercion is happening. किसी को कुछ गुस्सा नहीं आ रहा. So you can only do that by sending, let's see, a message to your boss. Boss, this is what has happened to me. I'll not be able to come to office. I'll take care of the work tomorrow. Thank you. Bullet points, small sentences, direct message, gone to the boss. He received it, he read it. उसके थोड़ी देर बाद आप उनको कॉल करते हैं. Probably then there will be a different situation. I'm just giving you an example. There are so many things. So oral communication leave impact on the receiver. Absolutely. So there's a lot of impact on the receiver. So there are various channels to it. So if you write something, it should be written so clearly, so direct that the person gets the same impact. It takes time to learn that skill. It takes practice to learn that skill. Then you move up to the next level, that is oral communication, wherein you are able to leave that impact by talking to a person on phone or maybe, personally as well, but he is not able to see you. Third is when the person is able to listen to you, he is able to read your message, and he is able to see you as well. This situation will have the highest impact. You see what I mean? Any questions? Okay.
थैंक यू। आई कैन गिव यू अनदर एग्जांपल। अभी कोविड सिचुएशन में क्या हुआ था, कोविड में काफी सारे लोग घर से काम कर रहे थे, ठीक है। तो पहले क्या होता था, ऑफिस की जो मीटिंग्स होती थी या हमारी पर्सनल मीटिंग्स जो संडे इवनिंग्स को होती थी हमारे बहुत ही करीबी दोस्तों के साथ, हम लोग ऑफिस में मिलते थे या बाहर मिलते थे, जो भी, हम काफी मिलजुल के बातें कर लेते। कोविड में वो नहीं हो पाया। सो हमने किन रिसोर्सेज का सहारा लिया? वीडियो कॉल्स का, ऑडियो कॉल्स का, फोन कॉल्स का। उसमें क्या होता था, हम वही सारी चीजें शेयर करते थे, बट उसमें वो इम्पैक्ट नहीं आ पाता था। तो हमें कई बार वो मीटिंग्स बार बार करनी पड़ती। और अभी आज भी हम अपने दोस्तों को मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं, अरे यार तू तो मुझे 2 साल बाद मिला है। नहीं भाई, मैं तो हर 15 दिन पे तुझे कॉल करता तो था। We used to say that, right? Was that not communication? That was communication. But since I was not meeting them in person, they didn't have that feel that the communication has happened correctly. Exactly was the case in office. Now we go to office, now we see that there's a different level of communication happening because we meet people personally. You see my point here? Okay. Anyone else? Is Uzma ma'am only one who's in the session? Okay, Ramesh. Okay, I take it. Thank you. So from tomorrow onwards, what we are going to do is we are going to be focusing on the important aspect of effective visual communication, that is reading and writing. That contains infographics, emojis and everything, graphs and everything. Effective written communication, उसमें भी reading और writing आता है. Effective oral communication, that does not include reading and writing. Oral communication includes speaking and listening, but the exception is in some cases when you have to read and say, read and speak, तो उसमें reading भी आ जाता है as a skill. क्या होता है, जैसे कि आप फर्दर एजुकेशन के लिए लेट्स सी कुछ लोग IELTS का एग्जाम देते हैं या कुछ लोग कोई और यूनिवर्सिटीज का एग्जाम देते हैं, कुछ लोगों को किसी फॉरेन कंट्री में सेटल होना है तो इमिग्रेशन के लिए IELTS और दूसरे एग्जाम्स देते हैं. सो हम उसकी भी थोड़ी स्टडी करेंगे यहाँ पे कि कैसे वो चीजें काम करती हैं, क्योंकि रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये सारे स्किल्स जो हैं वो किसी भी लैंग्वेज में सुपीरियरिटी गेन करने के लिए जज किए जाते हैं. यू हैव टू बी very sure of what you're doing in reading, writing, speaking and listening, right? So from tomorrow onwards is going to be our focus. So what I'm going to do is after this session I'll be sharing thoda time lagega, but I'll be sharing one second, I have to toggle through the screen. I'll be sharing this document with you that is for reading skills. Guys, it's very important. हम पहले इस पूरे हफ्ते रीडिंग स्किल्स पे फोकस करेंगे. 26 पेजेस हैं इसमें. आपके पास 5 दिन होंगे इसको स्टडी करने के लिए, इसमें आंसर्स नोट करने के लिए, एंड देन वी आर गोइंग टू बी डाइसेक्टिंग इट. इसका पोस्टमार्टम करेंगे हम सैटरडे, ठीक है. I would want everybody to participate in it, और इसमें कोई passing marks नहीं है, कोई failing marks नहीं है. My intention is for everyone to participate and learn. इसमें इतना सारा सीखने को हमें मिलेगा जिसकी हम प्रैक्टिस आगे इंटरनेट से देख के कर सकते हैं, न्यूज़पेपर से देख के कर सकते हैं, बुक्स रीड करके कर सकते हैं, एंड वी कैन इम्प्रूव आवर रीडिंग स्किल्स. बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इसमें. सिर्फ रीडिंग मतलब सिर्फ रीडिंग नहीं होता, हम कितना सही रीड कर रहे हैं, कितनी फास्ट रीड कर रहे हैं, ठीक है. हम खुद उस रीडिंग की जो अंडरस्टैंडिंग है हमारे दिमाग में जो जा रही है, हम उस हिसाब से अपने पिक्चर, अपने माइंड में उस पैराग्राफ को कैसे विजुलाइज करके एक पिक्चर क्रिएट करें. बिकॉज अगर हम उस पिक्चर को साइकोलॉजिकली अच्छे से क्रिएट कर पाते हैं, दैट मीन्स हम उसको किसी और को भी अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे. सो रीडिंग विल इन टर्न बिकम अ ग्रेट स्पीकिंग स्किल एज वेल. सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट पर्सपेक्टिव एज वेल. यू सी, इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा हम इसको. एंड प्लीज, आई वुड वांट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट गाइस. अगर आपने कुछ नहीं भी किया है ना, तो भी प्लीज just come on the screen and talk about it, जैसे हम आज डिस्कस कर रहे हैं. So Rami's lesson is like reading comprehension and answer the question. Yeah, it's almost like that. But to start with, it's going to be like that. But when we discuss it further, no, you will have to just you just save it on your local.
आप अपने सिस्टम में सेव कर लीजिए इसे और उसी पे आंसर टाइप कर लीजिए. यू डोंट हैव टू सेंड इट टू मी, मैं इसको चेक नहीं करने वाला. दिस इज ओनली फॉर योर प्रैक्टिस. क्या होगा कि हम इसको डिस्कस करेंगे क्लास में एंड एवरीबडी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेयर डू द स्टैंड. उन्होंने क्या अच्छा किया, किसी और ने क्या अच्छा किया और किसकी क्या गलती थी. You never know, I might be able to learn something out of it as well, right? Anyone have any questions? Please type. Okay, it's clear, ma'am. Okay, Fayaz. Okay, before we close the session, in today's session, do anyone have any questions? I'll be sending the slides, not the complete presentation. I was about to say. So I'll be sending the slides that we completed until today in WhatsApp, on the WhatsApp group. For every other thing that you may want to know, you can contact Ravi. So it'll take some time. Sunday thoda kaam hai. I'll download things out and I can kind of share it to you. ठीक है, हमारे पास उसके बाद 5 दिन रहेंगे पूरे. तबीयत से उसको स्टडी कीजिए. सैटरडे संडे हम इसी का पोस्टमार्टम करेंगे. ठीक है, and we want to make sure that we are best at reading. ठीक है. Thank you. No problem, guys. Anything else? Sir, I just wanted to add one thing. Before everyone leaves the meeting, there is a Google Doc in the chat section. So I would request everyone to fill this, especially the ones who have joined the class for the first time today. And if you fill this Google document, you will get your numbers and we will add you in the WhatsApp group so that Dhaval sir can share the slides and the associated documents with you, so that you can have the study material with you. So I'll just request everyone to quickly fill the Google form in the chat section. Whoever filled yesterday, they also need to fill today. No, the ones who have filled yesterday, they do not need to fill it again. I am just pointing the ones who have joined for the first time today. If you are new to the class, if you have joined for the first time today, just go and fill that form and we will add you in the WhatsApp group. Okay.